Good morning, children. Welcome to SSDY session lecture. So today we are doing something new about the season. In India, there are mainly three seasons: summer, winter and monsoon. आपको पता है इंडिया के अंदर तीन सीजन्स होती है, गर्मी, सर्दी और बारिश. इन समर वी फील वेरी हॉट. हमें गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है एंड वी लाइक टू ईट टू मच कोल्ड थिंग्स, है ना. और फिर होती है रेनी सीजन. देन इन रेनी सीजन व्हाट हैपेंस? इन रेनी सीजन ब्लैक क्लाउड्स आर देयर इन द स्काई एंड इट रेन्स टू मच. एंड आफ्टर दैट there is a winter season. You all know that, children, we are having 12 months in a year. हमारे यहाँ पर 12 महीने हैं साल में, है ना. और वो 12 months है, उसको हमने 4 months में डिवाइड किया है. And each and every season is having a 4 month. So today we are going to discuss about the winter season. In winter season there are two parts: autumn and spring. Winter season is divided into two parts, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हेमंत और शिशिर ऋतु. Okay, in autumn season there are 2 months, November and December. And in spring season there are January and February. So winter is having 4 months and these 4 months are divided into two parts: autumn and spring. Okay, now I will say a little bit about the winter season. मैं आपको winter season के बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ कि winter is one of the best season of the year. हमें winter बहुत अच्छा लगता है. क्यों? Because in winter the days are short. दिन एकदम छोटा होता है and the nights are long. रात बड़ी होती है. आपको पता है ना, आपको शाम को 5:30-6 बजते तब तक आपका अंधेरा हो जाता है और अर्ली मॉर्निंग भी हो जाता है. दूसरे दिन आप जब स्कूल आते हो तो अंधेरा अंधेरा लगता है ना. यस, सो इन विंटर सीजन दिस हैपेंस. एंड इन विंटर पीपल वियर सो वुलन क्लोथ्स, है ना. हमें बहुत ठंडी लगती है. हमें जब ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. एंड इन विंटर we eat healthy foods, fresh vegetables, fruits, healthy foods, and too much of hot drinks we like to drink. Okay, now here I have made a somewhat a chart of the winter season. Okay, so now I am going to describe which fruits we get in winter. You can see here we get strawberry, orange, grapes, pineapple, apple, guava, pear, cherry and pear. So these fruits are healthy and these are all juicy fruits. ये सब कैसे हैं? रस से भरे हुए हैं. So we like to drink the juice of the fruits and we like to eat it raw also. And we get too much of vitamin C from this. Next thing is vegetable. So you can see here we get too much of green vegetables in the market: cabbage, carrot, brinjal, cauliflower, potato, onion, spinach, carrot, radish, broccoli, beetroot, spring onion. ये आपको सबको पता है ना, spring onion? Yes, and lettuce. So we like to eat so much green vegetables in winter season. Why? Because जो सब्जियां हमें विंटर सीजन में मिलती है वो दूसरे कोई सीजन में हमें नहीं मिलती. And it gives us vitamins, minerals, proteins and carbohydrates. ये सब कुछ हमें इससे मिलता है and it is very healthy for us. So each and every day I told you in the class now that बच्चास you have to eat healthy food and healthy vegetable. So now the most thing is healthy food. आप सबके घर में ये सब चीजें मम्मा लाती है या बनाती है ना. कचरियू, इन गुजराती भी से कचरियू. इट इज मेड अप ऑफ सीसम. सीसम मतलब तिल. ओके, एंड दीज आर चिक्कीज.
different types of chickies your mother is making or purchasing from the market. We are eating peanut chicky, sesame chicky, dry fruit chicky, है ना? फिर these are all dry fruits. Then chawanprash. Some of the children are eating chawanprash also. Yes. So these are all healthy food. Now, in winter season, we like to drink hot drinks. हमें गरम गरम चाय, कॉफी, different types of soups we like to drink. हमें अच्छा अच्छा खाना पड़ता है ना. आपकी मम्मी आपको अदरक वाली, जिंजर वाली चाय पिलाती है, पुदीने वाली चाय पिलाती है ना? क्यों? अभी तो आप सबने किया होगा कोरोना में. आपकी मम्मी रोज सुबह सुबह कोरोना में काढ़ा बना के पिलाती है ना, जिंजर का, ब्लैक पेपर का. Yes, because this is very good for health. So in winter we like to drink hot drinks. Yes. Now in winter season we like to wear woolen clothes. हमें गरम कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं. क्यों? Because it protects from the cold and keeps our body warm. हमारे बॉडी को गरम रखता है. नहीं तो हम जल्दी जल्दी बीमार हो जाएंगे, सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाती है ना. Yes. So you can see that I have also worn a sweater, cap, muffler, gloves you can wear socks also, है ना. So here I have put some of the pictures of the woolen clothes that we are using in winter. Jacket, socks, mufflers, cap. So these are all winter clothes. Now do you know that children? We are celebrating some of the festivals in winter. ये हम winter में मनाते हैं. And these are having some importance about that. So first is Diwali. Diwali comes in winter season. We celebrate. Why do we celebrate Diwali? Because on that day, Lord Rama returned to Ayodhya after 14 years exile. And on account of that, the people of Ayodhya decorated it with diyas. So we are celebrating New Year, and this is the New Year of Hindu religion. Second is Christmas. So Christmas is the birthday of Jesus Christ, and this is the New Year of Christian, and it falls on 25th December. Third is Kite Festival. These all children are knowing. पतंगबाजी है ना, सबको पता है. उत्तरायण. On उत्तरायण what do? We fly kites, है ना. हम कलरफुल kites fly करते हैं ना, पूरे दिन भर टेरेस में रहते हैं और हम kite flying करते हैं, है ना. और and this picture is about a Pongal. You know that children? What do you mean by Pongal? Pongal is a harvest festival. अभी कोई मुझे ऐसा पूछेगा, मैम हार्वेस्ट मतलब क्या होता है? हार्वेस्ट मतलब कि बेटा हमारे खेतों के अंदर जब आपका क्रॉप रेडी हो जाता है, and at that time we have to cut it. So that time we are celebrating a festival called a Pongal and Lohri. And these both festivals are a harvest festival. आपको पता है पोंगल में क्या होता है? This is the New Year of actually a South Indian people. Because at that time the rice is fully grown in their fields. Rice यानी कि चावल वो एकदम रेडी हो जाते हैं उनके खेतों में और उनको कटिंग के लिए रेडी हो जाता है. तब वो लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में बने हुए नए चावल को पाउडर बनाते हैं. They make a powder and feel the white rangoli before their houses. वो अपने घर के आगे चावल से आटे से बनी हुई रंगोली बनाते हैं, and that is called a kolam. उनको क्या कहते हैं? कोलम. And they prepare a sweet. वो लोग एक मिठाई बनाते हैं. कैसी? They prepare a fresh rice. ये जो चावल कट के लाते हैं खेतों से, उनके अंदर जैगरी मतलब गुड़. Then they add little bit of ghee and little bit of milk and they become a paisam. वो लोग क्या बनाते हैं? पायसम नाम का एक स्वीट बनाते हैं. And they celebrate their New Year. And this last festival is the Lohri, and this is celebrated in Punjab. Why?
because at that time the wheat crop is also ready in their field and they enjoy the festival and always welcome their new crop. So today I have explained all about the winter season. So I think so you all are able to understand, and I expect that you will write something about the winter season in your notebook. So till then, bye and have a nice day.